My dear students, I am going to teach you the first chapter of 10th class, Science, Chemical Reactions and Chemical Equations. My dear students, in this chapter, I am taking first part, that is chemical reactions. For the chemical reaction, we have learnt in previous classes the two changes, physical change and chemical change. These two changes are very important change. This is a very important question. What is physical change and what is chemical change? Here you see. Physical change. What is physical change? First of all, I want to make a difference. I want to make this difference clear to you. What is physical change and what is chemical change? Physical change, for example, आप देखिए बर्फ से पानी बन सकता है और पानी से बर्फ भी बन सकता है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। आप घर में रोजाना देख रहे हैं फ्रीज के अंदर पानी की ट्रे भर के रखते हैं, थोड़ी देर में बर्फ बन जाती है। फ्रीज को बंद कर दें या ट्रे को बाहर निकाल कर रख दें तो पानी बन जाता है। ये चेंज कैसी है? ये फिजिकल चेंज है, ये कन्वर्टिबल चेंज है, यानी बर्फ से पानी बन जाए, पानी से बर्फ बन जाए। ये इस प्रकार की चेंज जो है वो फिजिकल चेंज है। और दिस चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज, ये टेम्परेरी चेंज है, ये परमानेंट चेंज नहीं है। केमिकल चेंज कैसी है? केमिकल चेंज में दिस इज ए परमानेंट चेंज, बिकॉज आप एक एग्जांपल लीजिए, दूध से दही तो बना सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते, ये वापस चेंज नहीं हो सकता। दूध से दही तो हम रोजाना बनाते हैं, घर में देखते होंगे आप, लेकिन दही से दूध कभी नहीं बनता देखा आपने। ये किस प्रकार की चेंज है? ये पॉसिबल है, फर्स्ट स्टेप। ये वापस कन्वर्शन इज नॉट पॉसिबल, so this is a permanent change. My dear students, you have seen in physical change this is a temporary change. In this both the aspects are possible or convertible, you can say. In chemical change, first is possible and second is not possible. It means conversion is not possible. This is a permanent change. You can take so many examples in the daily life of physical change and chemical change. This is a very important topic. What is the difference between physical change and chemical change? You will get a question. What is the difference between physical and chemical change? And explain with the help of the examples. So, this is the physical and chemical change difference. And now I am going to teach you chemical reactions. My dear students, chemical reaction, whenever a chemical change occurs, this is chemical change. Second, whenever a chemical change occurs, we can say that the chemical reaction has taken place. केमिकल चेंज के अंदर केमिकल रिएक्शन हो गया, यानी केमिकल change you see anywhere, you can say some chemical reaction has taken place. It means that is a chemical reaction. This chemical change is also
an example of chemical reaction. Now I am taking an example. My dear student, this is a very important chapter, and take it very seriously and listen very carefully. Now I am taking an example. Take a magnesium ribbon and burn this magnesium ribbon in the presence of oxygen or in the presence of air, because air has also oxygen. You will see a white flame at the burning time, and after burning you will get a white powder. What is this? This is a chemical reaction. This is an example of chemical reaction. Magnesium ribbon. Magnesium ribbon, after burning in the presence of air, turns into magnesium powder. So this is an most important example of chemical reactions. So whenever there chemical reactions take place, it means these chemical reaction can be written in the form of chemical equations. Now I am taking chemical equations. Chemical equations. These chemical equations can be written in the three forms. First form, sentence form. सेंटेंस फॉर्म. व्हाट इज सेंटेंस फॉर्म? प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस फॉर्म क्या है? जैसे कहा ऐसे लिख दो सेंटेंस. जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है. ये सेंटेंस फॉर्म है. व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज burnt in the presence of the air or oxygen, it gets converted in magnesium oxide. This is a English version. Now this is a sentence form. यानी जैसे जैसे कोई रिएक्शन होती है उसको ऐसे ऐसे ही लिख देना, ये सेंटेंस फॉर्म है. अदर सेकंड, वर्ड फॉर्म. ये थोड़ा सा प्यारे विद्यार्थियों इसे सेंटेंस से छोटा फॉर्म है, थोड़ा सा और इसको लिखने में आसानी हो जाएगी आपको. ये थोड़ा वर्ड फॉर्म, यानी वर्ड में ही लिख दो. कैसे? जैसे मैग्नीशियम. अब जैसे कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम, ये वर्ड में हो गया मैग्नीशियम. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, और क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब की बार मैंने सेंटेंस नहीं लिखा, केवल वर्ड्स लिखे. बात ऊपर सेंटेंस में भी यही था. सेंटेंस में क्या था? हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ. अब मैंने क्या लिख दिया? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड. इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया. छोटी फॉर्म होगी. और छोटी फॉर्म देखिए जरा, तीसरी. प्यारे विद्यार्थियों, और छोटी फॉर्म. और छोटी फॉर्म क्या है? हम केमिस्ट्री के अंदर सभी एलिमेंट्स के फॉर्मूले जानते हैं. जैसे मैग्नीशियम का क्या है? अब यहां पर देखिए, देखो मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है? Mg. ऑक्सीजन का क्या है? O2. और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा MgO. ये है मैग्नीशियम का फॉर्मूला, ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला, और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला. ये और भी छोटा हो गया, देखो तीसरा, यानी फॉर्मूले की फॉर्म में तीसरा. ये समझ गए? नहीं समझ गए? ये यहां तीसरा इसकी शीट में कर दो. ये यानी पहले सेंटेंस फॉर्म में इक्वेशन कैन बी रिटन. सेकंड, इक्वेशन कैन बी रिटन इन दी वर्ड्स फॉर्म. थर्ड, इक्वेशन कैन बी रिटन इन दी
फॉर्मूला फॉर्म, ये इसके फॉर्मूले हैं। सबसे एप्रोप्रिएट और सबसे उपयुक्त यही फॉर्म है और यही चलेगी। और मैं बार बार इन्हीं, जब भी कोई रिएक्शन लिखूंगा तो इसी तरह लिखेंगे, और ये रिएक्शन कैसे लिखी जाएंगी ये मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छी तरह से डिटेल में। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, दोनों रिएक्टेंट्स हैं, दोनों ये रिएक्शन करते हैं, रिएक्टेंट्स हैं ये। और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। सारी बात अच्छी तरह से आप समझ लो। दिस इज ए रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन Mg and O2 are reactants and MgO is a product after reaction. And reactants can be separated by the positive sign. In this case, product is 1, therefore there is no need of positive sign. So the equation can be written in this form. In the left hand side, all the reactants, in the right hand side, all the products, and reactants and product can be separated by positive sign. And in the middle, there is a sign of arrow. What is the sign of arrow? The sign of arrow represents the direction of the equation from left hand side to the right hand side. This is an arrow. What indicates? Direction of the reaction from left hand side to the right hand side. So this is about the equations, chemical equations. There are 3 types of chemical equations which can be written in the sentence form, word form and a formula form. सभी मैं हिंदी और अंग्रेजी के विद्यार्थियों के लिए, सब के लिए मैं क्लियर करता चल रहा हूं। जिन्होंने अंग्रेजी सीखनी है, इससे बढ़िया वीडियो और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल इंग्लिश में मैं आपको समझाता हूं। इसलिए आप मेरे साथ यदि ये वीडियो देखते रहेंगे और इंग्लिश भी ऐसे ही बोलते रहेंगे और सुनते रहेंगे तो आपको इंग्लिश एकदम सीख जाएंगे आप। और हिंदी के स्टूडेंट्स को भी आप अच्छी तरह से, जैसे ये पार्ट 1 कराया है, उनकी भी समझ आ गया। फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, इक्वेशन किस प्रकार लिखी जाती है, 3 प्रकार से इक्वेशन फॉर्म की जाती है, सेंटेंस फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में, फॉर्मूला फॉर्म में। और केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन जो केमिकल चेंज है उसी के अंदर केमिकल रिएक्शन ऑकर होती है, यानी हैपन्स होती है वहां पर। वो केमिकल रिएक्शन वहां पर प्रेजेंट होती है, तभी वो केमिकल रिएक्शन बनती है। यानी केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस इन दैट केमिकल चेंज। सो दिस was the first part, my dear student, and this is a very important part. In this part you have seen what is the difference between chemical change and physical change, and what is the chemical equation, what is the chemical reaction. Second, in first part there are 3 things: physical change and chemical change. Second, chemical reaction. What is chemical reaction? Example of chemical reaction is very important. Magnesium ribbon. Burn the magnesium ribbon, you will get, in the presence of air, you will get white flame, and after burning you will get white powder, that is magnesium oxide. This is the chemical reaction. और यदि इस केमिकल रिएक्शन को 3 प्रकार से हम इक्वेशन में लिख सकते हैं। कैसे? ये जैसे मैंने अभी बताया, 3 प्रकार से हम ये कर सकते हैं। ये these are the 3 methods. So in the last, my dear student, I will take next chapter, next part. You will get more knowledge of equations. And time is short. I am telling you that, and I am making request again. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.